Hello everyone, welcome to day 7 our Cloud and DevOps Learning Series। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज DevOps इंजीनियर्स को सिर्फ इंफ्रा ही नहीं एप्लीकेशन भी समझना होती है। सो अगर आपको एप्लीकेशन का बेसिक फ्लो नहीं पता होगा तो बिल्ड डिप्लॉय डिबग CI/CD पाइपलाइन समझना मुश्किल ही हो जाता है। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड एप्लीकेशन बेसिक्स फॉर DevOps यूजिंग Java, Node.js and Python programming languages। सो तो सेक्शन 1 में हम देखेंगे कंपाइल्ड वर्सेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। तो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेज आती है? सी प्लस प्लस, जावा। एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में पाइथन एंड नोड जेएस। सो फर्स्ट, कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या है? सो इट्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन। ये फास्टर एग्जीक्यूशन वर्क करता है। और इंटरप्रेटेड में क्या होता है? कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, सो इट्स नो सेपरेट कंपाइलेशन स्टेप। तो कंपाइल लैंग्वेज का एग्जांपल क्या है? जावा। और इंटरप्रेटेड का एग्जांपल पाइथन एंड नोड जेएस। सो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे हम जावा। ओके, सो जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, रन यूजिंग JVM, जावा वर्चुअल मशीन। इट्स ए जावा वर्चुअल मशीन। इसमें आता है JDK, जो कि जावा डेवलपमेंट किट होता है। इट्स यूज बाय डेवलपर्स, contains the compiler plus tools needed to build Java application। जो जावा का एप्लीकेशन बिल्ड होता है यूजिंग JDK होता है। और देखेंगे JRE, ये होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इट इज यूज टू रन द जावा एप्लीकेशन। इट कंटेन द JVM plus libraries। JDK क्या? जावा डेवलपमेंट किट। और JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जैसे हम डेवऑप्स के एंगल से देखेंगे, बिल्ड सर्वर JDK होता है और रन टाइम सर्वर JRE होता है। अदर जावा टूल्स क्या होते हैं? जो कि JDOC, it generate the Java documentation and it is used for the API docs। एक यूज होता है, इसमें हम API docs बना सकते हैं और Java डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। और एक होता है GDB। ये क्या होता है? इट इज अ जावा डिबगर and it is used for debugging a Java program। तो इसमें फाइल्स में आते हैं जार फाइल एंड और फाइल।
Java is a jar archive file and var is a web archive file. ओके, तो इसमें jar it is used for standalone Java apps, जो एग्जांपल Spring Boot jar और var web archive file it is used for the web applications developed on the Tomcat or WebLogic. तो DevOps में डिप्लॉयज करने के लिए ये फाइल्स यूज होते हैं जो हम डिप्लॉय सर्वर पे करते हैं। तो हम बिल्ड टूल्स है जावा में, popular tools like Maven, then Ant, then Gradle. Gradle. Maven used for it is the most popular tool in Java for build the application. It uses the pom.xml file. Okay, and it handles the dependencies automatically. तो हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एंट क्या है? एंट इट इज द ओल्डर बिल्ड टूल, इट्स मैन्युअल डिपेंडेंसी मैनेजमेंट जो कि एंट में होता है। और ग्रेडल में इट इज द फास्टर देन मेवन एंड इट्स यूज इन द मॉडर्न प्रोजेक्ट्स। तो डेवऑप्स रोल क्या है इनका? CI pipeline builds Java apps using the Maven or Gradle. ये है जावा का। हम देखेंगे Node.js। हम्म, अब Node.js का स्ट्रक्चर क्या है? It is a JavaScript runtime and it is an interpreted language. So it is widely used for microservices and front-end back-end APIs. Node.js is the JavaScript runtime. It is built on the Chrome V8 engine and it is used for the scalable applications. इसमें देखेंगे हम npm क्या होता है? It is the node package manager. It manages the Node.js dependency and it uses the package.json. इसमें फाइल होती है package.json करके। For example, any package install, so a command इसके लिए npm install express. ओके, some built-in मॉड्यूल्स है इसमें। बेसिकली मॉड्यूल्स डिवाइड होते हैं एक बिल्ट इन और एक एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स में आता है fs, http, os, events, tls और url and many more, but most of the these are used. fs यूज होता है टू हैंडल द फाइल सिस्टम। http यूज होता है टू host on the any host on any http server. os to work with the operating system. Events to handle the events. tls to implement the tls and ssl, and url is used for to parse the url strings.
it is built-in modules, एक्सटर्नल एक्सटर्नल मॉड्यूल्स भी है। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स में एक्सप्रेस है जो कि हमने कमांड में देखा अभी, एक्सप्रेस, देन रिएक्ट, देन debug, async एंड देन लोड sh। एक्सप्रेस की यूज होता है, इट इज द फास्ट एंड अनअपॉइंटमेंटेड वेब फ्रेमवर्क के लिए यूज होता है। रिएक्ट टू क्रिएट द यूजर इंटरफेसेस, debug, debug the application, async to work with the async JavaScript application, load sh to work with the arrays object string, etc. Node.js में स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो कि स्ट्रक्चर in my application, node application, node modules, इसमें फाइल्स, और इसमें होते हैं लाइसेंस readme.md, होता है package.json और लाइब्रेरी जो कि फाइल में होते हैं, और इधर होता है app.js। ये बेसिक आर्किटेक्चर होता है इसका। और थर्ड देखेंगे हम पाइथन, जो कि मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज in interpreted section. It is a free open source cross platform and compatible programming language. It is the most loved language in DevOps and automation, जो कि अब करंट में Python 3 वर्क होता है। इसके पहले Python 2 भी था और भी है, बट मोस्टली यूज Python 3 होता है। तो आप कभी भी DevOps में वर्क करोगे तो आपको मोस्टली Python 3 देखेगा। सो बिकॉज ऑलवेज Python 3 यूज इन DevOps। तो इसमें होता है पैकेज मैनेजर, जो कि पाइथन पिप मैनेजर करके है, PIP। इट इज द पाइथन पैकेज मैनेजर। It is used to install the Python libraries like for example pip install, request, जो कि इसमें आपको इन्हीं पैकेज का लोकेशन भी चेक करना है तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो, pip
शो कमांड, pip show, और फॉर एग्जांपल फ्लास्क। इसमें स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर ये यूजर होता है, लाइब्रेरी, और जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइथन 2.7 के अंदर भी साइड पैकेजेस होते हैं। सेम लाइब्रेरी 64 पाइथन 2.7 और इसके अंदर साइड पैकेजेस। जैसे पाइथन 2.7 है, इसमें पाइथन 3.7 भी, फॉर एग्जांपल 3.8 और 3.7, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो साइड पैकेजेस। इसका स्ट्रक्चर है पाइथन का, जो कि इसमें हम रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट भी यूज करते हैं फाइल। ये बहुत यूजफुल फाइल है, रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट, क्योंकि ये यूज होती है, यू वांट टू इंस्टॉल मल्टीपल पैकेजेस, देन यूज द रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट फाइल इन इट। It store all the packages are required and run a single command using the command like pip install -r requirement.txt requirements.txt, क्योंकि पैकेजेस होते हैं मोस्टली लाइक फ्लास्क और लाइक जिंजा 2, लाइक रिक्वेस्ट ऑल्सो। तो हम इसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जब हम रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट ऐड करते हैं, इसमें हम इसका वर्जन भी राइट करते हैं, जो कि करंट वर्जन जो भी है इसका, जो आपको रिक्वायर्ड है, आप लिख सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, और प्रोजेक्ट योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। जैसे 2.7.3, जैसे रिक्वेस्ट में करंट 2.3.0, लाइक दैट। ऑथर पैकेज, पाइथन पैकेज टूल्स जो कि इसमें इजी इंस्टॉल है, व्हील्स है। ऑथर पैकेज मैनेजर्स लाइक इजी इंस्टॉल। तो easy install की use, it is an older tool, but it is rarely used now, some projects.
For example, your application app.y, app.py is changed to the app.egg. Okay. For example, is here command is install install app. ओके, जो कि ये एग है, ये पाइथन में यूज होता है। जैसे हमने जावा में देखा, जावा में हमने देखा कि लाइक जार, ऐसे ही पाइथन में यूज होता है एग, E-double-G। और नेक्स्ट नेक्स्ट ऑर्डर पैकेज मैनेजर में आता है व्हील्स। व्हील्स व्हील्स यूज होता है, इट इज अ प्री कंपाइल्ड packages, and it is used for faster installation, and it is used in to boost the CI/CD speed up builds. So how DevOps use the applications? DevOps engineer does not write application code daily, but must understand the how application is built, what files are generated, how dependencies are managed, and how app is started and stopped. Because CI/CD, Docker, Kubernetes all depend on his this knowledge. So it is the basic for the application knowledge for any DevOps engineer or DevOps beginner to learn how to application run and how it's managed. So today we understand the application basics for DevOps, compiled versus interpreted, Java ecosystem, Node.js and NPM, Python and pip. So if you understand today's session, then comment application basics clear, like, share, subscribe. Thank you. Bye.